Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.5 up to question number 7, right? Now I hope you have understood all the questions that have been done in the previous videos. So as you have seen in this, you can see exercise, what we have to simply do is find out the volume of a cuboid and a cube, right? So let us see what next question, that is question number 8 is about, right? So यहाँ पे इस 8th question में हमें given है that a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume, right? So यहाँ पे हमारे पास एक solid cube है. So let me first draw a cube here. So we know that a cube is made up of squares. So like this. And we also know that a cube has all the edges of same side, right? So same length. So यहाँ पे हमें पता है कि एक cube की जो edge होती है यानी कि sides होती हैं that are same, right? And you can see that is given here as 12 centimeter, right? So all these sides are of 12 centimeter each, right? Now हमें पता है यहाँ पे हमें क्या करना है, इस solid cube से हमने कट किए कितने टोटल, इस तरह से कट करके कितने क्यूब्स जनरेट किए, 8 cubes जनरेट किए, right? So 8 cubes are generated from, you can see this solid cube by cutting them, right? So you can see जितने भी cubes आएंगे सभी की वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, right? So यहाँ पे अब इसमें एक बड़ा क्यूब था जिसकी साइड थी 12 सेंटीमीटर, इसमें से हमने 8 क्यूब्स कट किए जिनकी वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? नाउ व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब. सो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो क्यूब आएंगे जिनकी वॉल्यूम सेम होगी उनकी हर क्यूब की साइड कितनी होगी, राइट? सो द साइड विल ऑल्सो बी सेम, तभी उनकी वॉल्यूम सेम है. सो यू कैन सी वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द साइड ऑफ ईच क्यूब ऑब्टेन्ड, राइट? सो ऑल्सो देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया. फिर हमें इन दोनों के सरफेस एरिया के बीच का यू कैन सी रेशियो फाइंड आउट करना है. सो लेट अस मूव स्टेप बाय स्टेप. सो सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे ये जो 8 क्यूब्स आएंगे उनमें क्यूब की क्या निकालनी है, साइड फाइंड आउट करनी है. सो हाउ आई विल डू दिस, लेट मी फर्स्ट टेक दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रेटर क्यूब एज V1 और एक स्मॉलर क्यूब की जो वॉल्यूम है वो मैंने कैलकुलेट कर ली V2, राइट? सो नाउ स्टार्टिंग ऑफ द सॉल्यूशन हियर, so let assume the volume of solid cube as V1. So now when we talk about the volume of this solid cube, मुझे पता है इसकी साइड कितनी है. Now you can see side of solid cube that is taken as A. अगर मैं इसको A मान लेता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, that is 12 सेंटीमीटर, राइट? सो मुझे पता है कि वॉल्यूम कैसे निकलती है, यू कैन सी A क्यूब या फिर साइड इंटू साइड इंटू साइड, राइट? सो दैट विल बी, यू कैन सी 12 इंटू 12 इंटू 12, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड क्यूब, राइट? A क्यूब बोल लीजिए, एच क्यूब बोल लीजिए, एच को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द सेम थिंग, राइट? सो नाउ फर्दर यू कैन सी इफ आई जस्ट गिव दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द cubes that have been generated. Now according to question, we know that you can see this solid cube is cutted into, you can see 8 cubes of equal volume, right? So हमें पता है कि यहाँ पे सॉलिड क्यूब को कट करके 8 क्यूब्स बनाए हैं हमने जिनकी वॉल्यूम क्या है, इक्वल है. नाउ जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 8 क्यूब्स आएंगे. सो ये 8 क्यूब्स आए हैं, तो अगर मैं एक क्यूब की बात करूं उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इस सॉलिड क्यूब के 1/8 होगी, राइट? सो 8वां हिस्सा होगा ना, आप देख सकते हैं ये क्यूब क्या होगा, इस सॉलिड क्यूब का 8वां हिस्सा होगा. सो इसकी वॉल्यूम जो है वो इस सॉलिड क्यूब की वॉल्यूम के 1/8 होगी, राइट? So that means then volume of, you can see the new cube will be, you can see that me, let me just take it as V2.
सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में एज्यूम एज V2, राइट. सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अगेन हमें पता है क्या होती है, 1/8 ऑफ दिस सॉलिड क्यूब की वॉल्यूम जो है. सो 1/8 ऑफ V1. सो आप देख रहे हैं ये जो क्यूब ऑब्टेन होगा इसकी जो वॉल्यूम है वो सॉलिड क्यूब के 1/8 होगी, राइट. सो इफ आई जस्ट प्लेस नाउ V1, आप देख सकते हैं यहाँ पे V1 फर्स्ट इक्वेशन से क्या है हमारे पास, दैट इज 12 into 12 into 12, right. So now let me first make some space above. Now remember, first we have to find out the side of this cube, right. So don't forget the task, what we have to do here. Now you can see V2, that is 1/8 of 12 into 12 into 12. So let me just solve this. So 2 4 ja 8, 2 6 ja 12, 2 2 ja 4, 2 6 ja 12, then 2 1 ja 2, 2 6 ja 12. So आपके पास क्या आ गया, 6 into 6 into 6. ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ दिस न्यू क्यूब, राइट. सो आप देख सकते हैं हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का क्यूब लिख सकता हूँ. आप देखिए 6 into 6 into 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 का क्यूब. सो हमें पता है वॉल्यूम क्या होती थी, a क्यूब. सो आप देख सकते हैं फिर इस हिसाब से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज द साइड हियर विच वी हैव ऑब्टेन्ड एज 6 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं मैंने 6 into 6 into 6 को लिखा 6 क्यूब. अब मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलती है, a क्यूब. सो आप कंपेयर कीजिए. सो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 6. तो a क्या होती है, साइड ऑफ द क्यूब, राइट. सो यू कैन सी दिस इज व्हाट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, द साइड ऑफ द न्यू क्यूब ऑब्टेन, राइट. सो द साइड will be 6 centimeters, right. Now let me just move further into this question. Also we have to find the ratio between their surface area, right. So let me just make some space here. अब यहां पे बात करते हैं इस जो सॉलिड क्यूब है इसका सरफेस एरिया. अगर मैं S1 एज्यूम कर लेता हूं, नाउ एज्यूम द सरफेस area of solid cube as S1, right. So you can see S1 will be simply, हमें पता है surface area of cube क्या होता है. If you remember in the starting we have done the surface area of cube, that is 6a square, right. So let me just write down 6a square. So 6 into a, the side आप देख सकते हैं solid cube की side हमें given है, that is 12. So 6 into 12 square. So 12 into 12 लिख सकता हूं मैं 12 के स्क्वायर को. So this is, you can see, going to be the third equation here, right. So मैंने इसको क्या equation दे दी, surface area of the solid cube as 6 into 12 into 12, that is third equation, right. Now talking about this, you can see new cube here. So now assuming the surface area of new cube obtained as S2. So S2, the surface area of this new cube, हमें पता है अगेन सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका, 6a square से. नाउ दिस टाइम इस न्यू क्यूब की साइड हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज 6. सो दैट विल बी 6 into 6 into 6. So 6 square को मैंने 6 into 6 लिख लिया, ये 6 as it is, right. So that will be, you can see, fourth equation here, right. Now हमें क्या फाइंड आउट करना है इनका रेशियो. So I'm going to simply divide S1 by S2, right. So if I just make some space above, so you can see the ratio of surface area of new cube, sorry, the solid cube to the new cube is, you can see, क्या आ जाएगा surface ratio क्या आएगा surface area का, S1 upon S2, right. So S1 कितना है आपके पास, that is 6 into 12 into 12 divide by new cube का surface area 6 into 6 into 6. आप देखते हैं 6 से 6 cancel out हो गया 1 के डेल पे, then 6 2 जा 12 and then 6 2 ja 12. So 2 into 2 क्या आ गया, 4 upon 1, or you can say that 4 ratio 1, right. So this is how you have to find out the ratio of the surface area of the solid cube to
the new cube obtained, right? So that was all you can see in this type of question here. So students, let us move on to the next question now. Now this question is going to be the last question of this exercise. So I hope you have understood all the question in the exercise very carefully, and now you are able to do them on yourself, right? So let us see this last question here. So understand it very carefully, right? So यहाँ पे इस question number 9 में क्या given है? That a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour, right? So यहाँ पे एक river है. Let me just tell you कि हमें यहाँ पे river की क्या given है? Height given है. Depth you can see is simply the height. So यहाँ पे आपको river की height कितनी given है? That is 3 meters, right? Then you can see the width of the river is also given to you. So if I just draw the width here, the breadth you can say, so 40 meter width, right? Now we don't know the length of the river, remember this, right? So let me just tell you, if I just complete the diagram here, so this will be something like a cuboid, right? So if I just complete the cuboid here, something like this, so you can see this river is flowing like this, right? So if I just draw the complete diagram here, so यहाँ से river flow कर रही है, आप देख सकते हैं, from out of it you can see a cuboidal structure, right? So यहाँ पे हमें length नहीं पता river की, but we know that the river is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. So यहाँ पे जो rate है of flowing is 2 kilometer per hour. So 1 hour में कितना distance travel कर लेती है? 2 kilometers, right? So let me just tell you, first of all I'm going to write the given thing in the question. So सबसे पहले हमें given क्या है? Simply you can see the height of river, that is 3 meters, right? Then further we know the breadth of river as well. You can see the wide means breadth of river. So that is given to us as 40 meters, right? Now you can see simply हमें ये पता है that the river simply covers the distance of 2 kilometer in 1 hour, right? So you can see the distance covered by the river in 1 hour is 2 kilometers, right? So हमें पता है distance actual में क्या होता है? Length होती है, right? So here you can see indirectly the length is given to us as 2 kilometers, right? So अगर मैं इसको meters में convert कर देता हूँ, because यहाँ पे आपको height और breadth किस में given है? मीटर में. So अगर मैं यहाँ पे distance you can see इसको अगर मीटर में convert करूँ तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 meters होते हैं, right? So to convert kilometer into meter, we have to multiply it by 1000. So आपके पास कितना आ गया? 2000 meters, right? So now actually this is going to be the length of the river, right? So 1 hour में जितना distance ये travel कर रही है, you can see that is 2 kilometer given to us. You can see 2 kilometer per hour. So this is going to be the length here of the river, right? Now you can see how much water will fall into the sea in a minute. So you can see there is a sea out here in which this river's water is going to fall. So यहाँ पे ये पानी जो निकल रहा है river का, ये कहाँ जाके गिरेगा? In the sea, right? So हमें बताना है कि कितना पानी जो है इस sea में गिरेगा in 1 minute, right? So right now we know that the distance traveled by this river in 1 hour is 2 kilometers, right? So you can see, or you can say in 2000 meters, right? So 2000 meter भी बोल सकते हैं. Now let me first tell you कि हमें अगर यहाँ पे volume पता चल जाए इस cuboidal river का, so let me just talk about the volume of cuboidal river, right? So that will be, you can see L into B into H, right? So length कितनी है आपके पास? You can see we have calculated as 2000 meters, right? Then the breadth here is 40 meters. Then the height is also given to us as 3 meters, right? So let me just multiply this. So 3 and 1, 4 zeros will come. So let me just directly put the zeros. अब यहाँ पे 2 into 4 कितना हुआ? 8. 8 into 3 कितना हुआ? 24, right? So 24 and 4 times 0 meter cube will be the volume of the river which is going to fall into the sea, जो कि sea में जाके गिरेगी, right? Now ये हमें पता है कि ये 1 hour के अंदर हमें given था. Now we have to find out
the how much water will fall into the sea in a minute. So minute में कितना you can see water जो है वो sea के अंदर fall होगा. तो मुझे पता है कि ये जो था हमारे पास R में गिवन था, you can see 2 किलोमीटर पर आवर. सो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं, सो दैट विल बी इन अ मिनट, राइट? बिकॉज हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, राइट? सो अगर मैं इस आवर वाले को 60 से डिवाइड कर लूं, सो वी विल नाउ बी एबल टू नो दैट कि कितना यू कैन सी वाटर जो है फॉल करेगा इन अ मिनट, राइट? सो लेट मी जस्ट रब दिस एंड राइट डाउन. सो water that will fall into sea in a minute is equal to, you can see 24, 4 times 0 divide by, you can see 60, right? So यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना होगा. So 1 0 will reduce. So 6 1 is 6, 6 4 ja 24. So 1 2 3. So 4,000 you can see meter cube, you can see the water will fall into the sea in a minute, right? So this is how you can see we have to solve such type of questions here. So this is how we have come to an end to this exercise.